हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 73.96 मैं पापा जानी और वो माय नेम इज़ मरियम एंड यू आर वाचिंग एंड लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट शो अस्सलाम वालेकुम पापा वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप ठीक ठाक। आज हम दोनों ऐसे क्यों बैठे हैं साथ बस हम साथ आस्ता आस्ता कॉर्नर होते जा रहे हैं, शायद उधर कोई और लोग आ गए होंगे। फिर से हमने बहुत बुरा टॉपिक इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की एनीवेज वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट टुनाइट विद अस somebody I have known for almost a year or two. So I'll tell you about this person and their brand and then company. So this came across on my Instagram page that they do this frame with picture and a song on it. And I thought that was so cool. I was like, who does that? That is such a unique idea. And I randomly messaged her without knowing who she is or what business is or who's managing that. और मैंने उसको message किया and I was like, I don't know if I'm going to buy this or no, but I really appreciate what you're doing and I really wish you all the best or I hope जो भी हो अच्छा हो. And random मुझे नहीं पता था message आएगा आगे से कि नहीं. And this sweet girl, she replied to me with a voice message, which I think is very, personal and special. और तब से there's always a connection. So आप भी बोलोगे, but let's introduce Nabia and Shahek. Hello. Hello. They are from NabiaCreates. I'm sure everybody knows that in Dubai by now. And Papa, you want to say something to them? अभी जो मैं पहले स्टोरी बता रहा था ना, मैं behind the camera था वही मैं अभी. बताना चाहूँगा कि मुझे जब मरियम ने बताया, आप लोगों के मसलन वैसे ही बताया कि ये ब्रांड है, ये इस तरह का काम करता है, तो मैं बहुत खुश हुआ. वैसे ही खुश हुआ कि इस तरह का कोई किसी ने अप्रोच की है इस तरह की. और फिर मुझे खुशी की इंतहा ना रही जब पता चला कि पाकिस्तान के हैं, कराची के हैं, फिर और ऊपर से क्या कहते हैं, छोटी छोटी बच्चियां कर रही हैं तो और मसलन क्या कहते हैं यंग बच्चे कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात थी. क्योंकि पाकिस्तान में ये जब से डिजिटलाइज दौर हुआ ना, तो बहुत सारे लोग प्रिंटिंग प्रेस वगैरह ये जब इन्होंने शिफ्ट किया है तो सब गिफ्ट आइटम्स में गए हैं. तकरीबन अगर 100 थे ना ये सारे ये इस तरह के प्रिंटिंग वगैरह, उसमें से 90% लोगों ने जो शिफ्ट किया है वो गिफ्ट आइटम्स पे किया. और गिफ्ट आइटम में क्या है, सिर्फ पेन पे लोगो लगाना, शर्ट पे लोगो लगाना, कप पे लगा देना और डायरी पे लोगो. और इसको वो मर्चेंडाइज भी कहते थे, इसको गिफ्ट आइटम भी कहते थे. जब मैंने आप लोगों का काम देखा और ये देखा, फिर मुझे ये है गिफ्ट, इसको कहते हैं गिफ्ट, इसको कहते हैं पर्सनलाइज, इसको कहते हैं मर्चेंडाइज, इसको कहते हैं तो अब बाकी तो तुम लोगों Anyway, assalamu alaikum guys, welcome to our show. Hi Nabia, hi So, Shahek, how are you hats guys? off. Thank you for calling us. It means so much, really. Yeah. How are you guys feeling? It's really surreal because this is my first podcast, Oh, but I'm so okay. thankful to you guys. It's so great meeting you guys. Same here. Actually, I already told Nabia when we even started this show. I even told him कि पापा नाबिया को तो ज़रूर बुलाना है हमने कि she's such an inspiring woman and you guys do it so well. And मुझे तो every day I see your stories and it's mostly the same thing that she's posting, but I never skip them like, oh, they're doing this or they're doing that. Anyways, tell me Nabia, how are you? I am doing well. Little tired, but honestly, it's like, जब अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, that energy that comes, it carries with you, for a couple of days. So I'm very thankful to be here. By the way, Nabia और मैं से एक दफ़ा पहले मिल चुके हैं. It was a very short meeting. It was यार पता है, I don't meet people. ऐसे किसी को online जाना हो फिर उनसे मिलो, but I think you were the first one that I met. And हम लोग plan भी कोई 1-2 साल से ही कर रहे थे. And then turned out मैं भी business में काम कर रही थी, यही business में इनका office है, तो we were like चलो मिल ही लेते हैं. Literally आधे घंटे की वो मीटिंग थी. But it was like, we need more, we need to sit again. Yeah, but it felt like, किसी से मिल रहे हैं, like कब से जानते हैं. We just had some fries and we had such a good time. I remember. Fries and lemon mint, that's it. Yeah. Anyways, let's start. Because this show is mostly watched in Pakistan and we have a lot of Pakistani audience. So let us tell about your business. What is it? NabiaCreates. How did you come up with the idea, Naam and everything? Tell us. Okay, do you want to take that? Sure. So we started during COVID actually. So it was lockdown and we just lost our dad to a disease. And so it was, as you can imagine, a very hard time for all of us. So we just kind of started just as like a distraction, I want to say. She started with actually like illustration, hand illustration. That was our first product. And I remember when we got our first order, we both like spent so long trying to find the packaging material. Like we were like running around to like Daiso
and like day to day and just finding like cute things. I still remember it was the ugliest packing we've ever done. It was so ugly. But yeah, and that was the time we hand delivered it during COVID. So it was like a very big deal. But it was mostly just as a distraction, which turned into something so great. What about you? पता भी नहीं था, you know, जब हमने start करा. I mean, अब्बा के जाने के बाद, like obviously he was sick, तो so many hospital front and back. जब वो गए तो as a 21, I was 21. कोई I still don't know how to process those emotions. और फिर मम्मा की भी obviously जो उनकी side हमें देखने को मिली वो पहले तो कभी नहीं देखी, you know, to lose a partner. तो यार मैंने बोला कि चलो, because my mom is actually a true entrepreneur, she always has been, and I was like, okay, maybe I'll distract her. So, you know, just going to her, मम्मा क्या करूँ, कैसे करूँ. So she started working with me. I think उनको भी अच्छा हौसला मिला, and obviously I needed the support as well. But did you guys always knew that this is something you guys want to do, or it just happened I mean, in lockdown? I think I was a born entrepreneur. I started when I was 16 or 17 in school. Oh, तो wow. वो तो एक बहुत ही बड़ा फेल था, but that was very, मतलब उसमें बहुत हमने मेहनत करी. We used to run around these areas actually, JLT, Marina, लोगों से बात करना. That didn't go through, but I started back then. You have anything to say? नहीं नहीं, मैं तो बस आप लोगों की बातें आज वापस से सुनूंगा. इंस्पायर होने आए हैं. आज वुमेन एम्पावरमेंट डे है. मैं चुप रहूंगा. The common thing is they have a very successful running business. आप भी अपना business चला चुके ऑलरेडी पाकिस्तान में. इनका भी अपना business होता था. And I am mid struggling. कभी You चल have a रहा है. business, come Yes, on. I do, but it's in a struggling phase. तो आज तो मैं full motivation लेके जाऊंगी from these two, and आपसे तो लेती रहती हूँ. आज इन दोनों से लूंगी. You guys told me about कि पहला जो था बहुत failure था और बहुत गंदे packaging, which is common and very normal. So why don't you share a story of the best, you know, product that you guys have delivered, या memorable जो successful आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा रहा है, according to you guys? I think products तो obviously बहुत memorable रहे हैं. And you know, कभी कभी like कोई चीज़ रिलीज़ करते हैं, we don't anticipate यार ये इतना बड़ा हो जाएगा. That happened last year actually, जब बच्चों के स्कूल ख़त्म होते हैं तो हमने एक ऐसी गिफ्ट बनाया कि टीचर्स को देने के लिए. And I didn't think it would be so big, but it was such a huge collection for us. और it was nothing, it was for us, you know. हमें पता है, आपको बंदा जो चीज़ बनाता है उसको लगता है कि हाँ भाई ऐसी चीज़ बना रहा है, but और लोगों को they appreciated so much. We made like chocolate box and tote bags. But I think the most special delivery, याद है Sheikh, when we went all the way to Dera to deliver this chocolate box. Which one? So we went all the way to Rigga to deliver this chocolate box, and Yeah, I remember that. like छोटी सी लड़की थी, she came out and she's like, oh my god, I love you so much, I'm such a huge fan. And I was like, मेरी fan. And we hugged and I was so happy. मैं उससे पैसे ही लेना भूल गई. मैं इतनी खुश हुई थी. मैंने पैसे ही नहीं लिए. मैं उसे बोला तो पैसे, फिर मैंने उसके हाथ में पैसे लिए. But जो सुन रहे हैं उनको ट्रिक मिल गया. Nabia will love you. yeah, it was just so unreal to me. So that was the most special. Yeah, she would go give me a little card also and a chocolate. So, so Many cute. people don't know this, but मेरी शादी पे, which by the way I'm very upset you didn't come to my wedding. Yeah, I'm so sorry. Anyway, मेरी शादी Public apology. पे मुनीम की तरफ से, मुनीम wanted to know somebody जो ऐसे customize से बनाता है, and obviously I was like NabiaCreates, who else? तो वलीमे पे when they made the giveaways, that was also made by them. Even जो निकाह की बिद थी वो भी इन्होंने बनाई थी. I'll put those pictures up so everybody can remember that. That was also very nice. Yeah, it was so beautiful. आज तक हम like, you know, लोगों को दिखाते हैं, look we made this because बहुत अच्छा बना था, like that maroon pouch और logo आपने logo बनाया था. It was beautiful. अच्छा logo था. Okay, so this show is about most of generations, आज की generation, पापा की generation, and obviously आप लोग, you guys are much younger than I am, I guess. So what do you think is something that you guys are doing, you think in your business is good, that older people like your mom, for example, उनके thoughts उसी तरह के होंगे obviously business को लेके, and you guys might have fresh ideas or something different to your mom idea. What do you think is happening? I think digital media is the biggest. अब तक मम्मा बोलती हैं तुम्हें पता है तुम करो, you know, because that it's such a huge shift. पहले क्या होता था कि आपने किसी छोटे एरिया में लिया हुआ है, फिर आपने बड़े एरिया में दुकान ले ली, एंड नाउ इट्स लाइक इट्स एंडलेस. मम्मा हमेशा बोलती हैं कि तुम कैसे करती हो, मुझे नहीं पता. एंड आई वाज लाइक यार अब मुझे नहीं पता कि कोई ब्रिक एंड मोर्टर आप शॉप खोलो, उस पर बैठे रहो सारा दिन लोगों का वेट करना. फॉर अस इट्स लाइक वी आर ऑलवेज ऑनलाइन.
Another thing that my mom always talks about is that, like, the access of information, you know. अब तो मतलब कुछ भी मैं उनको बोलती हूँ कुछ ये टाइप करना है वो टाइप करना है, I'm like mama just use ChatGPT and she's like and जिसने बोला ना उसके सर पे आता है अच्छा बेटा अब तुम करके दो. So that's the biggest generational difference between us. Yeah. And what do you think? Anything कि वो बताती हैं जो that can be useful in your business? Course, यार वो wisdom आपको पता है, जो कुछ चीज़ें you can only learn with age. You can't if sometimes I end up comparing myself to my mom and I'm like यार मम्मा को इतना पता है, वो ऐसा करती है वैसा करती है, मैं क्यों नहीं कर सकती? And I'm like यार I'm half her age, even less than that. तो मैं कैसे उनकी तरह करूँगी? But that wisdom that comes, the connections, actually alhamdulillah we are an affordable गिफ्टिंग ब्रांड एंड वे ओनली अफोर्डेबल बिकॉज ऑफ हर. वो जिस तरह से चीज़ें ढूंढ के लाती हैं, मतलब ये सेम ग्लास आपको जब कम में आप सोर्स करोगे तो ऑफकोर्स आप सेल भी कम में कर सकते हो. सो दैट ओनली कम्स फ्रॉम हर कनेक्शंस. Why don't you ask something? मुझे एक तो यही जानना है कि कब आपको लगा कि ये अब हमारा जो है बिजनेस है लाइफ टाइम के लिए है, या लाइफ टाइम के बाद ज्ञान हमने मोमेंटम हमने गेन कर लिया है, अब इस इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर ही होता जाएगा. कब किस वक्त ये एहसास हुआ आपको? तुम्हें कैसे होता है? आई थिंक इट वाज हमारी जो पहले ही क्रिसमस गई थी, बिकॉज वी सॉ वीडियो द पीपल गेटिंग सो हैप्पी एंड आई थिंक दैट जॉय जो उससे मिला था वीडियो देख के, आई थिंक दैट वाज आवर मोटिवेशन रियली. It was in 2020 Yeah, itself, it was right? it was the same year. We started in what June? That time it was just both of us. Yeah. But like now we have other people. So we worked 24 hours that day. हमें समझ में ही नहीं आया. Orders हमने book कर लिया खुशी खुशी. अब जब बनाने के लिए गए, oh my god, हमें पता ही नहीं. We were low on inventory. 25 we were orders, 25 hours. We Yeah. were just working on those. But I think I realized कि यार अब like alhamdulillah we've gotten to a place where I started meeting people. मैं ना हमेशा ऑफिस में रहती थी तो मुझे पता ही नहीं कि आगे वाला बाहर वाला क्या सोच रहा है. I had no idea. And when I started meeting people and I'm like, oh okay, this is something. So I think that was my That time you guys decided, okay, this is something you want to follow and keep doing. yeah, exactly. But you know what is the best thing for me when I look at your business is that obviously you guys from Pakistan and Muslims and everything, but you guys celebrate and make products for each and every festive, which is so great. And so thoughtful also कि मतलब लोग कहेंगे normally other Pakistan like, oh नहीं हमारा तो ये नहीं है यहाँ, दिवाली हमारी तो नहीं है, हम क्यों बनाएं? But as a business and you guys do it so happily, not only do it, तुम लोग videos भी बनाते हो and then receive all those videos that you guys do. It's actually very nice. Yeah, I think यार when you're born and brought up here ना, वो एक्चुअली वो फ़र्क पता नहीं लगता, बिकॉज वो दिवाली और क्रिसमस और ईद का सेलिब्रेशन सब एक ही होती है. स्पेशली लाइक मल्टीकल्चरल अब इतना हो गया है दैट इट मेक्स सेंस टू सेलिब्रेट. हम दुबई में तो हम किसी जैसे मैं पापा को तो नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट मैं दिवाली लंच पे भी चली गई किसी के साथ. ईद पे हमारे घर इंडियंस भी आ रहे हैं, इंडियंस भी आ रहे हैं, ऑल ऑफ दैट. एंड ऑनेस्टली इफ दे कैन कम विद सो मच लव, देन वी हैव टू डू इट. या अच्छा, funny thing is Nabia that I did not know that you were from Pakistan. Yeah, no, I'll tell you why. Because as a grown-up Pakistani और हमने जब Indians को देखा है, they are very confident and we know that कि Indians बहुत ज़्यादा confident होते हैं और पाकिस्तान का एक section is very confident. कौन सा section? एक है, I'm not saying that. Anyways, so when I saw Nabia na stories, she was so like और मेरा ये मसला that I cannot talk on stories, ये अभी तक का मसला है, and she does it and she has to do it for us. I was like यार कितना अच्छा बोल रही है. तो for the longest time मैंने माना हुआ था that she's Indian. मैं कही कॉन्फिडेंस, बिजनेस चला रही है, कर रही है. मैं कही यार ये इंडियन है. और पता नहीं कुछ हुआ 14 अगस्त पे कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने किया. मुझे डाउट हो, मैं कहा पाकिस्तानी. मैंने कहा ठीक है, अगर इंडियन है 14 अगस्त पे क्यों इतना खुश हो रही है. Then I messaged her. एक दिन पहले खुश हो रही. Then I messaged her, I was like, are you from Pakistan? She's like, dumb, yeah, I'm from Karachi. I said, oh dude. फिर मैं और I remember I messaged her, I said, अब मैं और ज़्यादा खुश हूँ that you have this. हमारे घर में बहस होती है कराची वर्सेस और पाकिस्तान. हम लोग इस्लामाबाद पिंडी से हैं और ये कराची के. मेरे जो शुरू के पैदा होने के बाद से काफ़ी अरसे तक मैं मैट्रिक मैंने कराची से किया है, तो मैं कराची में ही रहा हूँ और मैं ये इनसे कहता हूँ कि कराची इज़ डिफरेंट दैन अदर दैन पाकिस्तान. तो ये नहीं मानते. ये आज का कराची देखते हैं जो रोड्स हैं ये हैं या उधर मोबाइल छीन जाते. मैं नहीं, स्ट्रक्चर ना देखो,
उधर के मेंटेलिटी देखो, उधर के लोग देखो। एक्चुअली हर बंदा तो बोलता है कि यार हर बंदा कराची आया हुआ है, इट्स लाइक दुबई, राइट? बट वी वेंट टू इस्लामाबाद वेरी रिसेंटली और it was a little slow. You know, when you go from Karachi to Dubai, it's okay, but when you go from Karachi to Islamabad, it's so slow that it takes you time to get into that. Yeah. That section was Karachi. No, but my dad is actually Indian, so he was half Indian. Yeah, his forefathers and all are from India. Oh, okay. So yeah, they love India so much also. I was almost right. Anyways, since I mentioned about that, you are from Pakistan and we are very proud of you. So, because so many people are moving to Dubai now, so many. Every day we hear like 5-10 people are moving to Dubai. He knows a lot of people have moved to Dubai. So, what is something, and they are coming here for business. They want to start a business, को कुछ अपना शुरू करना, because we all know Pakistan में क्या कुछ चल रहा है. So, what would you suggest them starting a business in Dubai? What are the key factors to that, according to you guys? According to me, it really depends, honestly. Like if it's like something similar to ours, I think it's just making your appearance online. I think that's the start, because I know I struggle with that even till now. Like I have the same problem as you. I'm very shy on camera, on story. So I think as soon as you break that barrier of just being comfortable on camera, I think that's just where the start is. Just to be more confident in your own. In yourself, really. In yourself, I agree. I think थोड़े से बचा लो, that you have some backup and then just go for it. कभी-कभी वो ख्वाब ही इतना बड़ा लगता है that you don't go for it, right? I think just you have enough savings and then you just start. We started with, हमारे पास 1200 dirham थे and हमने वो 1200 dirham से ही start करा. I think that's my motivation right there. Because I keep complaining, मुझे इतने चाहिए, then maybe I will start working. And he's like, Mariam, we don't need money to start a business. Yeah, like, truly. अच्छा, ऐसे मैंने भी बिज़नेस किया हुआ है और मैं इस वक्त जो है सपोर्ट करता हूँ अपने फराज के बिज़नेस को, मरीम लोगों के बिज़नेस को. जो सबसे मुश्किल मुझे लगता है वो लगता है कि पीपल मैनेजमेंट, आपस में जो सबसे मुश्किल काम है, पैसों का ये वो आगे पीछे वो तो चलें, फिर भी कुछ ना कुछ चलता रहता है. लेकिन ये जो ह्यूमन मैनेजमेंट है, जो आप ये आपस में पहले नंबर पे आपका आपस में जो रिलेशन किस तरह मेंटेन रखते हैं, किस तरह आपने डिवाइड किया हुआ है, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को किस तरह कवर करते हैं, तो कुछ है कोई फार्मूला या बस? Actually, हमारा एक ही फार्मूला है, we play good cop bad cop. So with everyone, right? Especially in front of customers. I mean, let's be honest, हर किसी से गलतियाँ तो होती हैं. So it's always like Sheikh is the first face. So Sheikh will first apologize, and then when it gets serious, then I come in. Because it's like my name. So it's like कोई मेरे आगे खड़ा हुआ है. Even an employee, Sheikh will we trade, right? जिसको ज़्यादा सही लग रहा है एम्प्लॉय की प्रॉब्लम, वो जो है गुड कॉप बन जाता है, दूसरा बैड कॉप बन जाता है. हम जो है उसके साथ बैठ के सोल्यूशन निकाल लेते हैं. बट आई थिंक आई एम समवन हु इज़ लाइक, आपको झुकना पड़ेगा किसी के भी सामने, राइट? अब सिर्फ मुझे ही वो चीज़ उतनी चाहिए, बाकी किसी को नहीं चाहिए. इवन द कस्टमर्स हैव अदर ऑप्शन, इवन एम्प्लॉयज, इवन सप्लायर्स, वी आर द ओनली वंस हु डोंट. सो आई एम ऑलवेज समवन हु बेंड्स एंड यू नो डज एंड लिसन्स टू व्हाट अदर्स हैव टू से. नहीं, और आपस में किस तरह आपका रिलेशन है? I'll tell you why he's asking this, because MBQ is also with two sisters. Same Yeah, I know. One old Api और मेरा है, and Api and I have this. अभी हम लोग का we are still adjusting to that work equation. तो मेरा ये होता है, when we have an argument during work, काम खत्म हो गया, when we go back to normal life, she's still mad at me. I'm like, काफी काम खत्म हो गया, we can be chilled out right now. This is just one of the examples that we have. So that's why I wanted to. दोनों की स्ट्रेंथ्स डिफरेंट है, दोनों की वीकनेस डिफरेंट है. Actually, mine is like, in terms of work, mine is full marketing, hers is full production. लेकिन Sheikh का क्या है, alhamdulillah, she listens, right? If I say something, she'll थोड़ा गुस्सा करेगी, but then she'll calm down. And for me, I think when we go back home, we're like, हाँ चलो छोड़ो, क्योंकि हम घर जाके इतना थक जाते हैं that वो टाइम ही नहीं मिलता किसी से झगड़ा होने का. खाना वाना खाया, थोड़ी देर कुछ देखा एंड देन सो गए. जब अगले दिन उठो सो इट्स ओके. बट आई थिंक वी फाइंड आवर मिडिल ग्राउंड. कभी कभी हमारी बुरी लड़ाइयाँ तो हुई हैं. ये लगा कल से मैं काम पे नहीं आऊँगी, and then I'm just like, यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मत आओ. And then we find that middle ground. अच्छी बात. नहीं, I think it's बहुत normal है. यार it's very normal. रोज का. यानी मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं जब ये आपस में लड़ती हैं तो. नहीं. एंड पे हम काम कर लेते हैं. That's the main thing, कि काम करना है ना. But I think one thing that you and I have in common is
maybe because we're more on the creative side, we also become the more dominant. I know I had this thing where Sheikh used to say, देखो सर हिला रही, Sheikh used to say something, I'm like नहीं ये नहीं चलेगा. And then I thought to myself after we had this one big fight, I'm like यार क्यों नहीं चलेगा, मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ये मार्केट पूरी टेस्ट करी हुई है. So now I'm like, when she says, I'm like yes, we should do it. नहीं एक बार पता क्या हुआ, इसने एक ऑर्डर लिया, कहती है कि कस्टमर wants a Spotify keychain and I want to deliver it to her. And like it'll be great, this is the first order I'm booking through my own WhatsApp. And the customer wanted at a very rigid time. बोल रही है सुबह 11 बजे मुझे पहुँचा. We have a policy कि यार आपको 9 से 5 के बीच में डिलीवरियाँ मिलेंगी. We can't guarantee because it depends on so many factors. And we use a third party. She's like नहीं मैं order ले रही हूँ. I was like ले लो. ले लिया फिर खुद पछताई. It couldn't reach by 11. उस दिन इतनी बारिश थी. I think it was the first rain of last year. तो आपको पता है पहली बार लोग पागल हो जाते. And it didn't reach to her on time. And she started calling Sheikh, and Sheikh was like मैंने ले लिया अब मैं क्या करूँ. फिर हमने वो कीचेन उठाई कोरियर से, हमने खुद जाके उसको डिलीवर करी to reach her. I think around 12 तक उसको पहुँच गया था. I was like देखो मैंने थोड़ा सोच के बोला. So what happens with me and Api कि हम लोगों का ज़्यादा she does all the designing part. I give her the क्या कहते हैं idea कि ये है, because she's more good in hand sketching and all of that. Or when she comes to me कि ये design, I'm like okay, approved, ये नहीं. And sometimes I will add one of the design that she likes, just what you said. कि अंदर से मुझे पता है कि शायद ये इतना prominent नहीं होगा, इतना सही नहीं होगा. But because she's also co-partner with me, or I have to take her advice. And exactly the same thing कि what if मैं गलत सोच रही हूँ, मुझे ठीक है, I know the market, I know कि कौन सा design चलेगा, but what if ये भी चल जाए. And एक दो दफ़ा ऐसा हुआ भी है, her design has worked. So exactly the same thing. But हमारा ये, I'm sure you're the younger one. Me? Are you the youngest? No, I'm the older one. You're the oldest in your family? No, I am younger than my brother, but I'm older between us. Oh, wow. Yeah. No, but with me, I'm the youngest. Yeah. तो मेरा वो बनता भी नहीं है ना, they're like तुम छोटी हो. छोटी रहो. I think शेखू भी बेचारी इसी की. एक और क्वेश्चन है मेरे ज़हन में. ये जो आपका काम है ना, इसके अंदर जो सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगता है, शायद इनको नहीं पता, प्राइसिंग. क्योंकि ये कस्टमाइज चीज़ होती है और आपने इसको ऐसा करके बेचना होता है कि किसी को क्योंकि वैसे अगर आप किसी के लिए स्पेशल कोई ग्लास बना रहे हो या ले रहे हो, उसके ऊपर कुछ कर रहे हो, हर चीज़ जब एक बंदे के लिए आपने ख़ास की तो उसकी प्राइस बहुत हाई चली जाती है. उस प्राइस को किस तरह मेंटेन करते हैं आप, इस तरह के वो काम मसलन वो ऐसी हो जाए कि हर एक को मसलन एक्सेप्ट हो जाए मसलन की. I think what I've tried to do now is to like जैसे ये ग्लास है, अभी हम सेम ग्लास देंगे in many different things, many different design. So that really helps us to keep our costs in control. But when we look at extremely customized things, we've had our fingers burned a lot of times, and sometimes we still do because अंदाज़ा नहीं होता. आपको लगता है कि ये चीज़ उधर से मिल जाएगी, मैं उधर जल्दी जाऊँगा लेकर और बना के दे दूँगा. But it doesn't work like that. You go to like 10 shops, you go to 20 shops, mall में गाड़ी लगाओ, उतरो जाओ. So sometimes we get our fingers burnt, but right now, alhamdulillah, my mom has helped me just come up with pricing strategies. ये ज़्यादा customize है तो इस bracket में fall होगा, कम customize है तो इस bracket में fall होगा. So we work alongside those. But honestly, accounting is not my forte. It's very. But ये है problem है यहाँ, इसको बहुत ज़्यादा. Yeah, it's also difficult to put a price on your art. I'm sure both of you can relate to that. Yes. अब तुमने इतनी मेहनत से कोई चीज़, how can you say ये 10 की है या 50 या 100 की है, you know? ये हमारे घर में भी काफ़ी डिस्कशन होती है. Like once we're done with pricing, भाई will come is like नहीं इतना महंगा कौन लेगा. And then we are trying to tell him कि we have a standard, we have a target audience, so ये ले लेती हैं. It's like no, this is too महंगा, nobody's going. So we हमारे घर पे ही इतनी बड़ी discussion पहले चली होती है about pricing. MBQ की pricing भाई बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं यार इतना महंगा मत करो. चलो बाकी. But there's quality. So we'll do the one-line answers. Okay. Quick, very quick. So is it आप भी both? answer दे सकते हो. हाँ, both of you, or like if any one of you have the better answer पहले. Okay, the most challenging aspect of running a business. Operations? I think time management. Okay. Difference. Yeah, exactly. That's why I said both of you can answer. Okay, one word to describe your leadership style, both of you.
We discussed this before coming. I would say I'm more of a laissez faire. If you're looking in business terms, like काम देकर मैं थोड़ा बहुत भूल ही जाती हूँ, and then I check back on the people. I think I'm more of like, I let them do whatever they like, and then I kind of help when they need me to. I think we're like the same pretty The much. same, yeah. Okay. What is your leadership style, by the way, when it comes to फ्रेंडशिप every answer best is one. friendship? Yeah. What is the biggest risk you guys have taken in your business? All the machinery maybe that we've invested in, or maybe just deciding कि यार ये full time करना है, you know, not pursuing a higher education or leaving that out to put a risk on this. Yeah, that's the biggest risk. I think so. Just one question randomly, Ms. Zain. You have never done any job before this, right? No. No. Oh wow. Yeah, actually my mom didn't let me work. She Oh. was like, because जब school में थे, you know, you'd only get these promotional job. And I've always been a weak person. मेरे पास इतनी ताकत है नहीं. So she never actually let me do it. शेख ने फिर भी करे, and then I just started this. So No, I'm proud of you. I'm also not a job person. So I was still struggling to run my own business. Okay. Okay, if your business was a movie, what genre would it be? NabiaCreates का क्या genre Because बनेगा? just yesterday we had horror. शेख ने बोला और मैं She agreed with me. She's what did you say? You said rom-com. आओ तुम्हें नहीं पसंद, फिर पसंद You know, आने I लगी. was because I was going through the question. I thought to myself, and it was the intern. The intern, Yeah. that's such an amazing. That's the goal for me. लेकिन इसको conjuring लगती है ये. अपना अपना वो है ना. इसका मतलब है कि प्रोडक्शन हॉरर है और मार्केटिंग जो है वो ये है. Okay, what do you guys prefer? Morning routine or night routine for productivity? I used to do night, but I can't anymore. Now I sleep and wake up early. I'm a morning Yeah, person. Morning. That's one of the biggest key for becoming a good business. Yeah. Hannah, are you proud of me? No, I'm not. Yeah, Because so this is the biggest fight in our home कि जल्दी उठना है. And he's still struggling with us कि हम शायद जल्दी उठें. Actually, I don't think जल्दी उठना है. I think time पे सोना मुश्किल है. Yes. You actually. can't. You can wake up early, Yeah, yeah. but you can't sleep on time, and then you can't wake up early. It's like what if hand you in hand. sleep late and then Yeah. you wake up early? Your body is Cheating हो still जाती है. tired. No, cheating. Your body is still tired. Mentally, you are not very active. Yeah. Okay, what is the favorite tool, productivity tool or app that you guys use? I know the app you guys use. Yeah. Procreate. Yeah. Yeah. Sheikh does use a lot for design. Even I use design mostly everything by hand. Oh yeah. Yeah. But So cool. I just use Google Drive. I think. That's Okay, for me. so now we all know that you guys been doing this for so many years, or NabiaCreates, and it's all customized and personal. If you guys had an option, or if you guys plan to have another business in some other industry, what would it be? I would do marketing. I think I could. do Digital good. marketing? Yeah, I think so. Maybe. I don't know. Digital agency by Nabia. I like it, but I have to think about maybe just help my mom, like with her stuff. I would do probably something in designing. Design. Like maybe some sort of AutoCAD or something. Yeah. What about you? मैं तो हर आर्ट फॉर्म को जो by है वो the way, टच you करना know, चाहता he's into all kind of मैं arts. तो और ये मेरा आज से 8 साल पहले की बात थी. उस वक्त मैं सिर्फ डिज़ाइनिंग करता था. उसके बाद तो मैंने शायरी भी कर ली, फिल्म भी लिख ली, और बहुत सारे ये फैशन के साथ इनके साथ भी हो गया. मतलब मैंने तकरीबन 1-2 और रहती हैं, वो भी कर लूँगा इंशाल्लाह. He has done it. I am not kidding. He has done interior designing. Yeah. He has done fashion for, because approval मेरे से तो हो जाता है, but main approval is by him only. And not only approval, he gives a lot of good ideas to us. और creative तो आप काम वैसे ही करते हो. Then film भी लिख लिया. कौन सी फिल्म थी? भाई वाली. Oh, you wrote it. Yeah. रावलपिंडी एक्सप्रेस मैंने लिखी. Yeah, I Script. didn't know. Yeah. Written by कैसे नवाज. Anyways. और वैसे मेरे आपके लिए भी बड़े अच्छे आइडियाज़ होंगे. अगर मैं जब आपका प्रोसेस वगैरह देखूंगा, ये सब कुछ चीज़ें देखूंगा ना, तो मैं काफ़ी मेरा ज़हन बस चलता ही रहता है. Mine is the same. रात की नींद नहीं आती. सोचते रहो. Do you guys know he has started his PhD? Really, mashallah. And I mean, I don't have to I look aspire out to for be like him. inspiration. I just look at him like, oh God, I have to do so much. This is enough. कभी भी लेट नहीं होता. मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो उस वक्त छोड़ दिया, अब दोबारा शुरू कर लेते हैं. That's It's never too late, amazing. yeah. Yeah, because like I never finished my bachelor's also. So I'm like, you know, it's like there is so much hope and there's so much left to life. Yeah. Yeah, it's true.
And we just like, something small happens, we just cry about that. कि यार, बस अब खत्म. yeah, life खत्म. अब क्या होगा? Anyways, okay, one last question to you guys. What advice would you give to all the entrepreneurs who are starting off? Or somebody who's like me, who's in the middle, who's struggling to, relaunch or come back to the industry? I think just start. Just write your plans for every day. Simple as 1, 2, 3, 4. I have 10 tasks in a day, and just get through them. करना है नहीं करना है, रो के करना है, हंस के करना है. Just कर लो. करते करते वो it becomes so big. You don't realize how far you've even come. So for me, it's just to start. I think it's just don't give up. Really, every small step is going to make a big impact. Honestly. लगता अच्छा, नहीं मेरे है. एज ग्रुप के जो बिजनेसमैन उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? I think digital marketing सीख ले. सीख लें. Yeah. Try to be a part of it because it is the new generation. And I try to tell my mom too. But she is learning so So your much. mom is fully supporting the business and she helps you with, or she has something? She has her own business, but she has helped us and still does a lot of things. Whenever we need her, then of she block course. out time. Yeah. And varna everything is like if we're ever booking a big order or releasing collection prices, koi Diwali ki collection, Eid ki collection, we show her the prices first. So she checks through them. Isme ye problem. It's same. I'm sure the support you get, and then we go through it. Support, dance, सब इधर से. Okay, now we let you guys ask us anything. And I told you this and you were like, I'm not going to tell you the question, I'll surprise you with the question and we are ready. You can ask anything to Papa Jani or me. I mean, up to Okay, you. I think I'd ask both of you. Yeah. Okay, if you were to start to get something together, just the both of you, what would it be? Matlab something that is everlasting, a business I know. or anything. After this podcast? After the podcast, yeah, podcast is not included. I already know the answer, but why don't you say? एक्चुअली मैंने और मरियम ने एक प्लान किया हुआ कि हम एक मूवी बनाएंगे दोनों, जिसको ये Main Papa direct डायरेक्टर, करेंगे. I will either assist him or मैं co-direct. स्क्रीन पे भी मैं लिखूंगा, राइटिंग भी मैं करूंगा. और ये क्योंकि मैं ये एक्टिव दूसरी तरफ होगी, फिजिकली दूसरी तरफ, और मैं जो है दिमाग यूज कर. डायरेक्टर चेयर पे बैठ के जो चीज़ें देखूंगा और तुम दोनों मिलके हम एक मूवी बनाएंगे. Yeah, that's the ये एक plan. प्लान है हमारा, देखो कब तक पहुंचता है. और फर्स्ट टाइम हमने बाहर बोला, वरना ये सिर्फ हमारी आपस की बात आपस की No, बात I है. think I knew I wanted to ask you because I've seen so much about you on Mariam's Instagram. I know about your poetry. I know about your interior design. I'm like a fan already. So I'm like, यार ऐसे ये लोग कभी साथ करेंगे? What will they do? Because I know this podcast कब से तुम लोग प्लान कर रहे थे. and पॉडकास्ट now- प्लान कर रहे थे. और MBQ वैसे तो मेरा नाम क्या जिसमें आप ही मेरा है, बट इट्स मोस्टली ही इज फुली इन्वॉल्व्ड इन इट. अब जाके मे बी he'll be a little busy with other things. अब कई मरतबा जब मैं खुद पीछे हटता हूँ, इस वजह से हटता हूँ, इसलिए नहीं हटता कि मैं कहता हूँ खुद करें. Yeah. मैं इनको एक कहता हूँ, तुम लोगों का एक ही एजेंडा है, मेरे बगैर जीना सीखो. तो ये फिर ये इनको फिर मैं जानबूझ के चुप हो जाता हूँ, सैड हो जाता हूँ, गायब हो जाता हूँ, फिर ये ताकि ये और खुद कभी फाइट कभी गलत आप लाइक करें. पापा ये हो गया, क्या करें, मैं बिजी हूँ, मुझे नहीं पता, खुद सोच लो. लाइक हो शिट, खुद सोचना पड़ेगा. Yeah, So all my of mom these is the same. कभी कभी छोड़ देंगी कि देख लो क्या करना है, हम देखते ही रह जाते हैं. अच्छा, एक और क्वेश्चन था मेरे लास्ट कि ये जब आप फैमिली में एक बिजनेस होता है तो वैसे आपका बहुत प्यारा रिश्ता है बहनों का, जिस तरह मेरे बेटे के साथ है, बेटी के साथ. लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है हमारे काम तो वो सिर्फ वो रिश्ता नहीं रहता. फिर Yeah. अब उस एक रिश्ते की एक अपनी खूबसूरती है, एक उसकी अपनी प्यार है, मोहब्बत है, जो कि उस काम की वजह से अफेक्ट कर जाता है. Agreed, yeah. तो लाइक समटाइम्स ही टेल अस, काश मैं तुम लोगों का सिर्फ पापा होता, मेंटोर ना होता, तुम लोगों के काम में इन्वॉल्व ना मतलब होता. मेरे इनके हर काम मेरे से अटैच्ड है. मुझे कुछ ना कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे देखना पड़ता है ना, ये नहीं इसको इस तरह करो. तो काश मैं ये बैंक में होते, मुझे परवाह ना होती जो मैंने अच्छा क्या किया है, आज इतने चेक बने, ये बस. तो आप लोगों के भी ये होता है कि कोई भी सोचता है कि काश हम सिर्फ बहन भाई होते. Because there is no dinner, there is no lunch, there is no breakfast with, मतलब काम के अलावा कभी कभी ऐसा लगता है या तो काम या बंदा फोन पे होता है. डिनर पे बैठे भाई फोन रख दो. We are a family at the end of the day, but weekend आता है, so when there is that time, I think we just try to navigate around it.
I hide her phone half the time. No, She's but always it's on her actually phone. very difficult. आपको पता लगे कैसे करना है तो जरा हमें भी बता. Because it's a very fine नहीं, line. मैं विश करता हूँ कि काश मैं सिर्फ फादर होता इनका और बस कुछ नहीं, बस इनको सिर्फ उसी तरह ही, क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे होते हो ना, आप फिर गुस्सा भी होते हो, फिर आप डिसअपॉइंट भी होते हो कभी वो, तो वो ये फीलिंग पेरेंट्स के लिए मेरे हाल में नहीं होनी चाहिए. उनको सिर्फ प्यार करना चाहिए. मुझे कभी कभी इस चीज़ की वो कमी होती है, लेकिन ये पैकेज है. But I think फैमिली में आपस में बिजनेस चलाना इज ऑल्सो वेरी ग्रेट थिंग. अगर अच्छा चल रहा हो, जैसे आप लोगों का चल रहा है, अगर वो चल जाए तो इट गोज बियॉन्ड एंड बहुत अच्छा चल या जाता जो आप अपनों पे भरोसा कर सकते, you can't trust others with it. आपने कोई और क्वेश्चन पूछना? No, I think think we're this done. is it. Thank बस you. It was lovely. Thank मुझे you तो so बड़ा much. मरियम ने डराया हुआ था कि इतने सवाल क्वेश्चन लेके आए हैं, मैं तो तैयार बैठा हुआ. Yeah, we first है ना. No, thank you so much, Shahek. Thank you so much, Thank Nabia. you. Meeting you the first time. Yeah. So nice meeting you guys, and you guys are big inspiration for me. Trust me, I'm struggling mentally because I got No, married and why? so much things are happening up and down. And he knows. मैं खुद बहुत जो है ना वो आपके We are fully काम से, inspired by आपके you. We नाम love से, you आपके guys. चीज़ों से बहुत ज़्यादा. And we wish you all the best for any future Thank plans that you. you guys Thank have. you. Thank you so much for coming. Thank you. Itni dur. Thank you so much. Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed this episode with Nabia and Shahek. The both sisters are doing a great business in Dubai, and I'm sure, inshallah, इनका business बाहर से पूरी दुनिया में आने वाला है, inshallah. And thank you so much for आज तो watching. मेरी दुआएं भी हैं आप लोगों के साथ, माशाल्लाह. और पहले भी हैं और भी हैं. अब हो गया आप लोगों के सारे काम. काम हो गया, अब हम भी मैसेज करेंगे. बाबा जानी की दुआएं भी चली. Keep giving us a laugh. Keep subscribing to our YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz. Say bye to this camera, guys. This camera.